Hi friends, and thank you so much for your positive response on our videos and calls related to your Ielts queries. Here I am with another interactive session with Seema Ma'am. Hello. Hi, Please allow me to pick your brain again. and this time it is for? Headings, ma'am. The most time consuming questions. Yes, it is, if it is not done with the proper technique. So, what is the technique? See, headings are the only question where you will have to read the paragraph in a detailed way. Detailed reading उसी में होती है, ठीक है? Because basically you need to understand what is writer's motive to write that paragraph. वो क्या communicate करना चाह रहे हैं उस paragraph के through. So, you mean to say the purpose of writing the paragraph? Yes, and to understand this purpose of writing the paragraph, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने paragraph कैसे read करना है. So when you read the paragraph, read the first sentence, translate that sentence into your mother tongue. फिर next sentence को पढ़ो और उसको समझो, connect it with the previous one, and then you need to read the third sentence. Hold on. Do we need to translate all our sentences? No, you don't have to translate the entire paragraph. What you need to do is translation first sentence का भी बहुत difficult नहीं है. आपने सिर्फ prepositions, helping verb ये translate करने हैं, so that you are able to understand the main idea that writer is trying to communicate in that first sentence. उसके बाद जब आप next sentence को read करके उसको connect करते हो और फिर आप पूरे paragraph को read करके उसको एक के बाद एक sentence को connect करते रहना है आपने. So this is what the strategy is to do it. Sorry, ma'am, but how will I connect it? Connect करने के लिए you will have to be little vigilant about the pronouns, about the demonstrative words. I'm not getting any of this. चलो, I'll explain this with an example. ठीक है? एक example आप देखो, which I've got handy here. कि question बोल रहे थे, this is the paragraph. Paragraph says the newspaper production process has come a long way from the old days when the paper was written, edited, typeset and ultimately printed in one building. अब इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूंगी तो वो बोलेगा न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस हैज कम अ लॉन्ग वे. तो काफी लंबा मतलब काफी लंबा रास्ता तय करके आगे आया है. एंड ओल्ड डेज जब पेपर वाज रिटन दिस इन वन बिल्डिंग. तो शायद मेरे को लगता है कि नेक्स्ट सेंटेंस विल टॉक समथिंग अबाउट कि अभी का तरीका कैसे, या मे बी दे विल डिस्क्राइब द ओल्ड डेज ओनली. सो वी हैव अ काइंड ऑफ एन एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस बोले दीज डेज. द मिनट आई रीड दीज डेज तो इसका मतलब प्रेजेंट सिनेरियो बता रहे हैं वो. The editor, sub-editor, and journalists who put the paper together are likely to find themselves in totally different buildings or maybe in a different city. तो मैं connect करूँ तो पुराना और नया तरीका आ गया. Third sentence, this is the situation which now prevails in Sydney. अब example के through वो prove करना चाह रहा है. The daily paper is compiled at the editorial headquarter known as the pre-press center in the heart of the city, but printed far away in the suburbs at the printing center. लास्ट सेंटेंस हेयर, तो हेयर किसके लिए बोल रहा है? प्रिंटिंग सेंटर के लिए बोल रहा है. ह्यूमन बीइंग आर इन द माइनॉरिटी एज मच ऑफ द वर्क इज डन बाय ऑटोमेटेड मशीन कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स. ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ का जस्ट मुझे समझ में आ गया पहले कैसा अब कैसे है, यही बता रहे. अब इफ आई रन थ्रू द लिस्ट ऑफ हेडिंग, तो फर्स्ट हेडिंग बोल रहे रोबोट्स वर्किंग टुगेदर. रोबोट्स के ऊपर पूरा पैराग्राफ नहीं था. प्रिपेयरिंग एलजीबी नहीं था. एक हेडिंग बोल रहा है स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन. शायद हो सकता है पहले एक बिल्डिंग में था, अब डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट बिल्डिंग में. न्यूज़पेपर सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी. अब जो स्ट्रैटेजी से नहीं करेगा वो इस हेडिंग में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट सेंटेंस आपका क्या बोलता है, मच ऑफ द वर्क इज डन बाय द कंप्यूटर. तो ये अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आप इस तरह के डाउट्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे. लास्ट बोल रहा है गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर. तो मेन मोटिव कैसे लेके आना न्यूज़पेपर को प्रिंटिंग सेंटर का नहीं था. सो आई जीरो डाउन ऑन वन ऑप्शन, स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन. गॉट इट? Yeah, that was really easy, and I Yes, think it is. with this strategy, I will be able to solve my heading questions. Yes, you will be able to. Thank you, ma'am. My pleasure. Thank you guys for watching this video. You can contact us on the numbers mentioned below for any of your IELTS related queries and join us on our regular doubt solving sessions. Thank you. Goodbye.